As Anuj said, KBC started 22 years ago, and we are now in the 14th season overall, and 11th season for Sony Entertainment Television. So it's been a very long journey. 2010 is when we decided to bring KBC on Sony Entertainment Television for our viewers. We told ourselves that we will only do this show if the iconic host of KBC, Mr. Bachchan, agrees to do the show once again, and he graciously agreed to do the show. And since then, 10 seasons done. This is the 11th we are embarked upon, and our association and our relationship has only grown since then. And I'm very sure that we'll have many more seasons with Mr. Bachchan in the future. The pandemic actually kept all of us away from meeting anyone, and still there are many occasions when medically we are not about to be in public. So that's some kind of a holding back. But I'm very glad that we're able to have a live audience on the floor today and in this entire season. We tried playing with the audience somewhat distinctly by keeping them away, going through various tests, and not being able to, touch the contestant, not being able to hold their hands or guide them to the chair if there's a lady, just going and embracing them when they do well. That was kept away. And that kind of a distance, that physical distancing was somewhere not the very same as we have now, but it's wonderful to have that atmosphere once again, and to be able to feel a bit normal in that sense. So I'm very glad that I'm here, and some of the restrictions that we had earlier on have now been removed, and we are closer to zero. इस सीजन की खास बात ये भी है कि इस साल हम स्वतंत्रता दिवस के 75वीं के गर्व का महापर्व हम मना रहे हैं, तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इस सीजन में, किस तरह सेलिब्रेशंस होंगे और किस तरह ये कोइंसाइड हो रहा है द सेलिब्रेशन ऑफ सीजन 14 एंड ऑफ कोर्स 75th ईयर ऑफ आवर इंडिपेंडेंस। ये आपने देखा और मिस्टर एनबी सिंह has described some of the changes कि बदलाव आया है, चाहे वो 7 करोड़ से 7.5 करोड़ या वो 75 लाख का जो एक और बढ़ाव है, कहीं ना कहीं वो इसकी वजह ये भी थी कि उसमें 7.5 में 75 लिखा था, जो बढ़ाव है 75 लाख का उसमें 75। ये बहुत ही सटल इंडिकेशन के हम लोग अपना 75 आज़ादी का महापर्व मना रहे हैं। इस तरह की कुछ चीज़ें इसमें India is also evolving beautifully, and इस सीजन में हम कई contestants को से मिलने वाले हैं जो सोसाइटी के अलग अलग walks of life से आए हैं, and I think we're celebrating the diversity as well. So you have had, of course, the opportunity to interact with many of them and hear their stories and take them to the people. तो इस साल इस सीजन जो contestants आ रहे हैं, उनमें क्या कहानियाँ आपको भिन्न दिखी हैं, and how we celebrating India and Indians? कंटेस्टेंट्स ही इस शो की महिमा है। जब वो अच्छे होते हैं, जब वो सही खेलते हैं, उनकी कहानियाँ जो हैं उनको सुनने में आती हैं और किन कठिनाइयों से वो गुजरते हैं या क्या क्या उन्होंने अपना योगदान दिया है देश के प्रति, उन सबको सुन करके हम सब बहुत प्रभावित होते हैं। हमारा काम तो केवल प्रश्न डालने का है और बताने का है कि सही है या गलत, लेकिन उनकी जो कहानियाँ हैं, उनके जो सवाल हैं, उनके जो उत्तर हैं, वो हम सबसे कहीं ज़्यादा एक बहुत ऊँचे स्थान पर है। और अलग अलग वर्ग के लोग अलग अलग जगहों से आते हैं, सबका कहीं ना कहीं एक योगदान रहा है देश के प्रति, और उसे जान करके और इस माध्यम से केबीसी के माध्यम से इसका प्रचार हो देश भर में, ये सबसे बड़ी बात होती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि शायद पहली बार यहाँ आ रहे हैं, और उनकी जो कहानियाँ हैं, उनका जो योगदान रहा है वो अद्भुत रहा है। अभी आपने देखा हमारे वीडियो में जो एक
आर्म फोर्सेस से जो आए थे, उनकी कहानी सुनकर के तो आश्चर्य होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हमारा कभी इस ओर ध्यान दिया नहीं है, उनकी कहानी हमने सुनी। वो जो आर्मी से आए थे उन्होंने कहा कि 43 bullets or shrapnel are still inside my body. It is not a joke. I mean, look at the sun. और गर्व से कहते हैं कि जितना कुछ हमको लगा है हमारी छाती पे लगा, हमारे पीठ पे नहीं लगा। I was facing the enemy. I was not running away. These are some of the brave stories that we hear. And how wonderful for him to say कि मेरे अंदर जो खून है वो मुझे मेरा खून नहीं है, वो हिंदुस्तानियों का, क्योंकि इतने लोगों ने अपना खून दिया है उसकी जान बचाने के लिए। These are some of the amazing stories that we have. और आपने देखा होगा कि अलग अलग लोग आ रहे हैं, कोई स्टार्टअप कर रहा है, कोई प्रोफेसर हैं, कोई स्टूडेंट हैं जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ये सब दर्शाते हैं कि देश जो है प्रगति के रास्ते में कितनी तेज़ी से चल रहा है। और इनको यहाँ मिल करके तो हम बहुत प्रभावित होते हैं। और इसी तरह हम अपने शो को भी एक तरह से बढ़ावा देते हैं कि हमें अवसर मिलता है ऐसे लोगों से उनका परिचय जान सकें। दैट इज़ व्हाट रियली मेक्स द इस तरह से देखते हैं। सवाल है सर दैनिक भास्कर से, केबीसी के 22 वर्षों की जर्नी को आप किस तरह से देखते हैं? कहाँ है सवाल मेरे पास आए हैं सर। तो मैं उनके बिहाफ पे सर मैं देखता हूँ कि मुझे एक और नौकरी मिल गई। और एनपी सिंह सर, मनी कंट्रोल से आपके लिए, is there a collective thought process behind the creation of the campaign thought that taps into the pulse of the country? That's always our intent to keep meeting the cross section of our viewers and people in general to understand where the nation is going, which direction are we moving in, and try and convey that message through our campaigns on It's 75 years of independence. मेरे ख्याल से जितना कुछ अभी तक हमने किया है, चाहे वो एक तरह से अभी आपने वीडियो पे देखा किस तरह से एक रचना लिखी गई है, कविता लिखी गई है, और उसके जो वाक्य हैं, उसकी जो बातें हैं, उसके जो शब्द हैं, वो दर्शाते हैं कि भारत किस पथ पर चल रहा है। और 75 वर्ष एक देश के जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। कई बार मुझे लगता है कि मुझे पूछना चाहिए कि और कितने देश हैं हमारे विश्व में जो कि 75 सालों में वो दिखा सकते हैं जो भारत ने दिखाया, और आपको उसका उत्तर मिल जाए। तो मैं समझता हूँ कि चाहे वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो, उन्नति हो, कहीं भी 75 साल में जो कुछ भारत ने किया है वो अन्य देशों की जिनको कि 75 साल हुए आज़ादी मिले, उनकी क्या स्थिति और हमारी क्या स्थिति। NBC sir, from Indian television, KBC after being translated. May I just interrupt? Please sir. Actually, I read somewhere that in a similar situation, one of the persons from our country was talking about how great India is and so on and so forth. And there was an Englishman who was there in front of him and said, how about talking something about Britain? So he said, you are responsible for the largest number of countries being able to celebrate Independence Day. Meant to be a joke, but yeah, I thought it was very funny. Thank you, sir. NBC sir, from Indian television. KBC, after being translated into an Indian format, has time and again adapted to trends.
How do you make sure the show remains true to its core of celebrating Indians and their genes? But it has the best TRPs. Short and sweet, indeed, sir. Thank you. NP Singh sir, India TV say, KBC is one of the most successful quiz shows on Indian television. What, according to you, is the reason behind its success? Everything that you've heard till now is will announce. Bachchan sir, आपके लिए from Indian Express. You mentioned in your blog there is an each time I say never again, and yet it all comes back when the commitment has been made. What is it that makes you rethink about hosting the show, and what brings you back? Where did you read that? This has come from Indian Express. Just read that thing again. There is an each time I say never again, and yet it all comes back when the commitment has been made. आपने अपने ब्लॉग में लिखा था. जी, अरे भाई वो तो ये ज़माना बड़ी मुसीबत का हो गया. कुछ भी लिखिए, न जाने क्या क्या मायने निकाल लेते हैं उसमें से. बहरहाल वो लिखा था जहाँ हम काम कर रहे हैं अभी एक फिल्म में हैदराबाद में. उसमें हमारी जो वेशभूषा है उसमें 1000 तरह के प्रोस्थेटिक हैं, बाल है, दाढ़ी है, लंबे लंबे हैं. वो कह रहा था मैं कि हर बार मैं तय करता हूँ कि यार ये जो अगली पिक्चर इसमें अगर दाढ़ी होगी तो मैं काम नहीं करूँगा, और हर बार वापस वही पिक्चर आ जाती है उसमें काम करना. तो उसका वर्णन है, केबीसी के बारे में नहीं है. लेकिन सर केबीसी पे आप what brings you back? आप क्या है जो आप वापस आकर हॉट सीट पे आते हैं? हमारी जो जनता है जो यहाँ अभी प्रेस बैठा हुआ है, यहाँ बैठी रहती है, और हम जब आते हैं तो जिस तरह से वो स्वागत करते हैं, जिस तरह से वो कंटेस्टेंट को उत्साह बढ़ाते हैं उनका, वही चीज़ें हैं जो बार बार हम बनाते हैं. Thank you, sir. NP Singh sir, AFAC say, since the time Sony acquired KBC, KBC, and that's why it's been so successful in the last 11 seasons, and will continue to be successful in the future as well. With Mr. Bachchan hosting it. of course. Danish sir, India TV say, with the rising number of audiences on OTT platforms, a number of shows have moved to the streaming spaces or come up with a. What, according to you, has changed or remained the same in the show? What has changed? What has changed or remained the same? तो क्या बदला है और क्या बरकरार रहा है? The show has always remained the same because it follows a certain format which is technically, legally, we cannot change. But the anchors keep changing, and that's fine. No, I mean, I haven't been the anchor all along. I mean, there are so many other anchors in different languages, and they're all doing so well. दानिश सर, इंडियन टेलीविजन से this ज्ञान जहाँ से मेरे बटोर लीजिए, लेकिन पहले जरा टटोल लीजिए. अभी दानिश जी ने समझाया इसको कि भरपूर इन्फॉर्मेशन आजकल मिल जाता है एक बटन दबाने से, और हो सकता है कि जो आपको सुनाया जा रहा है या जो आप पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा सा टटोल लें, क्योंकि हो सकता है कि वो सही ना हो, गलत भी हो. आमतौर पर देखा गया है कि वो सही होता है, लेकिन एक बार उस ओर भी ध्यान देते हैं. बहुत से लोग जो हैं उसके ऊपर अपनी टिप्पणी करते हैं, अलग अलग किस्म की खबरें जो हैं वो छप जाती हैं इंफॉर्मेशन. केवल यही एक सावधानी है कि आप उसे टटोल तो लीजिए, लेकिन एक बार टटोल लीजिए मतलब उसको रीचेक कर लीजिए कि ये सही है या नहीं. सामना से सर आपके लिए सवाल कि I just want you to know that there's a tremendous backup crew and a team that is involved in this show of over 400 people, and you never get to see their faces, you never get to talk to them, but if it was not for them, this show would never have happened. And I really want to applaud the entire people behind the screen and behind the stage who work assiduously. And you know, we come here at an appointed hour, but they've been here hours before to set everything up and make sure that the show goes smoothly. I do appreciate that, and I love the fact that it is because of them that we are able to do what we do. In particular, I want to say that
the percentage of the ladies that work on the show is almost equally balanced. And they are so hard working. So I want to thank them. Thank you.